Students, I am your Saroj sir. I welcome you to my class in physics. Today we will read about a topic which is magnetic field at a point on the axis of a coil conducting current. This is my MEC. MEC means magnetic effect of current, and this is class number 3. What I did in class number 2, I found out the same magnetic field at a point not on the axis but at the center of a circular coil. There is a circular coil like this, and at the center of the coil we found out magnetic field. But today it is not at the center but at any point on the axis of a coil conducting current. Prior to that, in class number 1, we had read about Biot-Savart's law. It is a very helpful, important, significant and meaningful law in studying magnetic effect of electric current. This is a sketch of the concept of Biot-Savart's law. Mn was a conductor. Mn was the conductor and it was carrying current. What current it was carrying? It was carrying current which was I. I was the current which was being carried which was flowing in the coil, and due to a current carrying conductor at any point near the conductor, here, there is a magnetic field. We have chosen P as a point where the magnetic field is found out. To find out that, we first took a small current element XY whose length was dl, and due to dl, what is the magnetic field at P? We have discussed all these things. That is equal to dB, and dV equal to mu0 by 4 pi I dl sin theta by r square. But B, which is known as magnetic induction flux density or magnetic field intensity, is a vector quantity. So in vector form, it is equal to mu0 I by 4 pi I dl sin theta, that is dl cross into r cross. So it is very clear that the vector direction of dV is always perpendicular to dl vector and r vector. This is very essential, and one has to stick to this thing, then only one can understand this thing. To find out magnetic field at the center of a coil, it was easier. But to find out the magnetic field at a point, this point we have taken as P, this point we have taken as P. It is on the axis. O, this is center. So this is the axis and current is flowing here. Then it is very tricky. I don't say that it is difficult, but definitely it is very tricky because it involves three-dimensional concept. But the limitation is that the board is two-dimensional, and on a two-dimensional board you cannot show all the three vectors, which is the basic vectors in a three-dimensional space. So you say, you know this thing, this is x-axis, this is y-axis, this is z-axis. Now I rub it. If you only handle x and y axis, so that is in xy plane, this is no doubt, this is a two-dimensional plane. But if it is necessary to find out the third axis, which is mutually perpendicular to these two things, then you have to do the third axis like this. You see, this is 90 degree, it is okay. You can very well see it. X-axis, Z-axis, they are also perpendicular to each other. Does it look that there is 90 degree here? It looks like 120 degree. But all along you have accepted that, though it does not look like a 90 degree angle, but it is 90 degree in the real case. Similarly, you see, I have brought this example for you. There are three axes. This is one axis, this is another axis, and this is another axis. I keep it like this. Let me say this is your x-axis. Let me say this is your like this. Or you can say this is your x-axis. This is your y-axis. No problem. This is a two-dimensional space having two mutually perpendicular axes, x and y. But what is z? Z is here.
How can you show z axis here? You cannot, because you have to show a vector which is perpendicular to x and y. Yes, you can say this is x. Dekho, bhalo kare dekho. This is y and this is your z. You can say it because we have taken out this thing in space. But in board you can only show x and y. Z पे हमको कौन करिया पड़िबो? Either हम एमती देखिया पड़िबो किंबा हमको यार को देखिया पड़िबो. Okay, Z never looks perpendicular to x and y, but actually its fact is that thing. So we show by convention x, y and this as z. So even though z cannot be drawn on a two-dimensional board, we have to accept that z is perpendicular to x and perpendicular to y. So the space रे तो मतलब अंकन करिबो like this. I repeat for the last time. This is x, this is y, and obviously this has to be your z. But you can never draw this figure. You can never draw this figure in a two-dimensional board by showing this as 90 degree, this as 90 degree, this as 90 degree. You have to keep this thing in mind. Okay? I think you are clear. This is clear and you should keep it in mind. Pilamane, what we have done so far, I have told you about the basic concept of a 3D space and what is the difficulty in showing a 3D system of axis in a 2D board. So, तुम 2D board रे तुम केबे 3D axis जोड़ा कि परस्पर प्रति 90 डिग्री तुम केबे करि परिबो नाही. ठीक अछि. Let us now come to the concept of magnetic field at a point on the axis of a coil. This is my coil. एरा घरे तयारी कराइछि. सेमति ओटा किछि ओटा हाई फाई coil एटा नुहो. तो आमे घरे मिलुथबो अनेक जिंस को व्यवहार करी जोठी हमर डिफिकल्टी अरेज करे तको आमे कोन करि परिबा आमे ताको बुझि परिबा फल करे. सेमति हम घरे गोटे इलेक्ट्रिक तारा पड़िथिला. ओके, मु से इलेक्ट्रिक तारा को मोड़ी देके ताको ओटा कॉइल कर देली. ओके, आई अस्यूम दैट एठी केतटा टर्न अछि मात्र गोटिए टर्न अछि. सो दिस इज ए कॉइल. ओके, देन ता सेंटर टा एठी अछि एंड यू सी हियर इज द एक्सिस. देखछो ना नहीं. So this is the axis of the coil, and on the axis we can take a point here or here wherever you want to do. And हमको काढिया पड़िबो ए करेंटा जोगु ए पॉइंट रे केते मैग्नेटिक फील्ड सृष्टि होची. आउ थरे देखो एटा ला कॉइल, एटा तर एक्सिस सेंटर दे जाईची. तो जे कोन से पॉइंट एक्सिस पे नै की तमे कोन काढी परिबो तमे एटा मैग्नेटिक फील्ड काढी परिबो. नो डाउट अबाउट इट. तापरे मु ए कॉइल टू एठी रखी. तापर आ गोटे कथा हला देखो ए कॉइल टा को मुझे चित्र करी. आई कैन डू इट लाइक दिस. देन यू सी दिस द फ्लैट, दिस द प्लेन ऑफ द कॉइल. ओके, मुझे यदि एमिति रखिबी देखो तमे कोन प्लेन टा देखि परछो देखि परनो. ता बदले मु कोन करछि ना मु एठी आ गोटे घरे हमर डिनर प्लेट को आनिछि. दिस इज अ कॉइल. व्हाट यू सी द प्लेन ऑफ द कॉइल. ए प्लेन टा कोन हे परिबो ना वर्टिकली रही. देखो वर्टिकली रही. द प्लेन इज वर्टिकल. इफ आई कीप इट लाइक दिस द कॉइल इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल. दिस इज वन व्यू. बट सपोज मु जदि एटा को एमितिया रखिली तमे कोनटा देखुछो. यू लोग कोनटा देखुछो तमे केवल तारा सर्कमफरेंस रो अर्ध वृत्तटा ही केवल देखुछो ना नहीं. तमे एटा प्लेन देखो ना. व्हाट यू आर सेइंग? यू आर सेइंग ओनली ए कर्व of the coil. So there is a difference in visualizing the plane of the coil when you see the coil in this position or in this position. Okay, this is side view. This is a side view. Okay, then you see current. Current can flow either in clockwise direction. Eta co direction. Barta, gota, dita, tinta, clockwise direction, or it can flow in anti-clockwise direction. The choice is ours. It can flow in clockwise direction or you can see it in anti-clockwise direction. You can look at the coil in this manner or you can look at the coil in this manner. When you look like this, pi r square, the radius and the area of the coil is now visible. But when you see like this, area is not visible. I think it is very clear. I think you understand this. आमे कौन करिबा ना ए रकम भाबरे coil को देखिबा. We'll imagine that the coil is in a
vertical plane. The coil is in a vertical plane. So this figure which I have taken is a coil in the vertical plane. You can say तुम जो material दिया देची से material रे एमितिया चित्र करा देची. This is a vertical plane and this is your coil. This figure will give you a fair idea about a vertical plane in which a coil is present there. I think there is no doubt about it. So this is your vertical plane, and a coil ray, what type of current you have taken? You have taken anti-clockwise current. Let us consider a coil in vertical position or vertical plane. Let us consider a coil in which plane? It is in your vertical plane, right? Then I is anti-clockwise current in it. It is very clear. Then C taken. Now C is the center of the coil. C is center of the coil. Okay. Then A. What is this thing? This is the coil. It has the radius. A is equal to radius of the coil. Then P is a point on the axis of the coil. जो coil is एटा तर हला axis ए axis उपरे P नाम गोटे बिंदु निया देछि राइट तापर कोन आसिला जे x टा कोन एटाला सेंटर एटाला बिंदु तले बिंदुर सेंटर पाखर दूरत्व x is equal to distance of point P from the center of the coil. Coil का मध्य बिंदु ठारो P डाउची दूरत्व. Now let us choose a small element dl. तो हमें नाम कौन नहीं पड़ेगा कि जाकर ताने EF E और F. इटा EF नहीं दे पड़ेगा PQ नहीं दे पड़ेगा XY नहीं दे पड़ेगा. Anything can be taken. Let us choose a current element EF. You can name it anything. तो मैक्सवेल जहाँ ना दिए क्यों तब से आई ना वो EF of a small एक छोटी हवा दरकार of element EF on the coil. कहीं ना प्रथम में आरी पाइगी हमें कौन करिया ना मैग्नेटिक फील्ड टी काढ़ीबा या कोई डीबी बेली कहिबा तापर एंती coil रो भिन्न भिन्न अंश मैग्नेटिक फील्ड काढ़ीकी नेट फील्ड को बाहर करिया पे हमें निश्चित होगा. ओके लेट अस करंट एलिमेंट हियर. Let dl is equal to length of the element. Okay, so that is equal to length of the element. अब गोटे कथा रहला s. S second, S is the distance of the point P from the center of the element. এই এলিমেন্টের মধ্য বিন্দু
ए मध्य बिंदु रो P पर्यंत दूरत्व आम केते नेलु आम S वैल्यू नेछु बर्तमान आम टिके बायट-सेवर्ट्स लॉ रो ए मैथमेटिकल फार्मूला ऊपर टिके चिंता करबा एडी देखो I dl क्रॉस r तळे r की होची एटी गोटे एंगल अछि थीटा ओके तो हम काढिया पड़े एठी मध्ये थीटाटा केते हमें थीटा जानला परे सिना हमें ए फॉर्मूला अनुसार ताको यूज करि परिबा एथरे अधिकांश कंफ्यूजन सब बड़े 100 पिला हजार पिला कर कंफ्यूजन होची ए एंगल थीटा विषय कारण बायट-सेवर्ट्स लॉटा जो ता जो बेसिक कांसेप्ट है पिरामिडा पढ़ी थांती परीक्षा रे लेखिकी मध्ये फुल मार्क पाई जांती बट द आइडिया इज नेवर क्लियर व्हाट इज दिस थीटा इट इज वेरी क्लियर थीटा इज द एंगल बिटवीन dl इट देखो टेंजेंट बनाइछि जो करंट एलिमेंट इट होछि r वेक्टर dl वेक्टर कोन हला थीटा एठी देखो r टा होछि कोन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिमेंट नाउ यू कम हियर what is r इट मोटे r नाही मोटे थी हमर जो नहीं जो हमें सिंबल्स नहीं जो एटी r मोटे नाही ओके p अछि एलिमेंट अछि ए जो डिस्टेंस आको में कोन कहि परिबा आको में एटी जन को जो r वेक्टर सेने आको में कोन कहि परिबा वी कैन से दैट दिस इज आवर s वेक्टर इज आवर s वेक्टर तले एटी कोन केला r वेक्टर अबव वेक्टर dl वेक्टर एटी कोन 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 होना r वेक्टर dl वेक्टर कोन ना यू सी एठी कोन हेची ना तमरे एटा होची करेक्ट मो एमसी देखो जे एमसी देखोनी एट तमरे हला गोटे एलिमेंट रा लेंथ केते dl देखो करंट इज एंटी क्लॉकवाइज देखो करंट होची एंटी क्लॉकवाइज तुमको लक्ष्य करी मो कैमरा फोकस करी छी जदी एमिति करथांती करंट इज देखो क्लॉकवाइज फिर करंट केमति जाउची एम जाउची सो नाउ जदी एटा क्लास ही थांता मु तो पछे थांती एमती हेले पिला माने करंट कोन तमे कहि थांता क्लॉकवाइज मु कहि थांती एमिति हेले करंट कोन एंटी क्लॉकवाइज आबर देखो इट इज लाइक दिस सो डेफिनेटली इट इज एंटी क्लॉकवाइज एटी करंट प्रत्येक जगह करंट रा डायरेक्शन होची टेंजेंशियल तो एई जगह देखो करंट एति आसिला एई जगह आसला परे एई बिंदु रे एई एलिमेंट रो मध्य बिंदु रे ता डायरेक्शन कोड है कोड है टेंजेंशियल हो सेठी देखो एटा एंती अछि एई जगह रे ता मध्य बिंदु रे ता डायरेक्शन ता कोड अछि ना टेंजेंशियल अछि एवं करंट रो डायरेक्शन जुआडे करंट एलिमेंट रो डायरेक्शन मध्ये से आडे केवल एई जो लाइन टी मु टाणी छी आकु मु कोन कहि परिबी करंट एलिमेंट वेक्टर और आइडियल वेक्टर यार जोटा टाणी छी एटा r बदल रे एटी अछि s त वर्तमान मोर कहबा कथा जे ये जो dl वेक्टर और s वेक्टर कोण केते मु पछेरबी ए कोणटा देखा चित्र अनुसार लिखना तो थीटा बलिया देखा छै हम थीटा बलिया हम लिखिछु ओके बट द पॉइंट इज whether it is less than 90 degree greater than 90 degree or equal to 90 degree एटा क्लास में पढितले आउरी भलो हेता था लाइवली हेता था तमे संगे संगे कहि दो सर इट इज नॉट 90 डिग्री आउ जा हो कि न हो इट कैन नॉट बी 90 डिग्री बट नो दैट इज नॉट करेक्ट काहे ना तमे जो थीटा टा को मन रखो प्रत्येक पिला मन रखो थीटा इज द एंगल बिटवीन s एंड a का भीतर कोन है थीटा टा एकड़ जे रेडियस ऑफ द सर्कल एकड़ जे डिस्टेंस s ता भीतर कोनटा केते अछि ना थीटा अछि बट इट थीटा अछि ना नहीं ओके बट I am not asking you that question. I am asking you what is the angle between the distance एठी मोर जे coil case रे देखो एटा को दिया जाईची it is taken as equal to s vector बट तमे आगुर पडला r vector लेखाई छै s vector और dl vector रे कोन केते ता माने एटा एवं एटा रे कोन केते and that should be 90 degree मु लेखु छी in the figure angle between s vector and
dl vector is 90 degree. तुम संगे संगे से जो बस पाठ पढ़ुच तुम चमकी पड़ 90 तुम देखा जाऊनी तो मुझे लिखिदेली अतएव थीटा is actually 90 degree in our figure. Okay, I again repeat, theta is the angle between dl vector and which vector? R vector. जो चित्र में हमें नहीं S vector बोले हमें नहीं ओके केमी खेला देखो एठी किछि परे मते तुमको किछि ओटे देखियो पड़ियो न देखेले हबो नाही ओके नाउ यू सी this is the coil in a tangent okay mo outer coil dele never take theta as the angle between A and S. It is not true. It is the angle between dl and S. mo kon kali na मोर गोटे स्टूडेंट मोर छात्रटी अच्छी मोर अति प्रिय छात्र तुमरी भाया सी किस दिन तले पाठ पढ़ुला नाउ सी इज ए मैच्योर्ड यंग फ्रेंड ऑफ माइंड ताके मो डाकिबे से मते टिके हेल्प करिवो ओके ता नाउ छै सुब्रत सुब्रत प्लीज कम हियर ए कड़े आस he is having a recording studio his name is Subrat he was in charge of Ravenshaw radio 3 to 4 years back now he is having his own recording studio he is Mr. Subrat तमे टिके धर एमती एटा हला the coil एटा ला कोन हला ना तार ये tangent एवं एटा ला कोन एटा हला ए डिस्टेंस एटा होची को डिस्टेंस एटा होची p भले के लक्ष्य कर एटा होची s हैला तापर मु सुब्रत को कहले तमे से कॉइल टे काढी नियो तापर तमे लक्ष्य कर डी कलाटा होची डीएल वेक्टर कलाटा को वेक्टर डीएल वेक्टर ए लालटा होची को वेक्टर एस वेक्टर तमे कोन केते को मुझे जे क्लास से पढु थांते तमे समते मिसी कहितांत सर 90 डिग्री नेवर फॉरगेट दिस पॉइंट तमे घरे मध्ये एकटा चिंता करि कर आउ तरे सुब्रत आसो ठीक मो पाखो ओके जमती कॉइल टे धरतले सेमती रखो सो दिस इज द कॉइल एमती यदि सीधा करी दिस इज द कॉइल दिस इज द ब्लैक वन इज द टैंजेंट जोडा को मो डीएल वेक्टर बेली कहूची दिस इज डीएल सो दिस डीएल वेक्टर पॉइंट मोर एठी अछि लक्ष्य करो आउ कि हमें पछू जिबा पॉइंट हमर एठी अछि एटा जे तर एक्सिस पॉइंट अछि एई पॉइंट पी को मु जॉइन करली का संगे डीएल संगे जॉइन करली तमे काढी दिया सुब्रत सीटा को नाउ यू सी यू लुक ब्लैक और रेड पेन भितर कोण केते द एंगल इज 90 डिग्री अर्थात डीएल वेक्टर और एस वेक्टर भितर कोण होला 90 डिग्री तो तमे एमिति भार चित्र देखिले तमे एटा जानि परिबोनी सो आई थिंक यू विल एक्सेप्ट थीटा इज 90 डिग्री कोठी इन द फिगर राइट सो थीटा इज द एंगल व्हिच इज इक्वल टू 90 डिग्री इन द फिगर पिला माने तुमको आज पाठर सब मोस्ट ट्रिकी कंडीशन को मु तुमको डेमोन्स्ट्रेट कर देखई ओके मु तापे आ गोटे मो स्टूडेंट रो साहाय्य लेतली तमे देखिलो जे एठी जो थीटा लिखाई जे थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट एंड व्हाट एस वेक्टर एंड डीएल वेक्टर एठी जे थिला थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर एठी आर बदल का कोन लेइछु हम एटा एस लेइछु तो एटा को आर को लिखै दे कि एटा को एस कर देली एंगल है थीटा इसको दिखाई देले थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री से अनुसार फॉर्मूला कोन चेंज हे जिवो जोटी जोटी आर थिला सेटू एस लिखिबे तळे एटा कोन हे जिवो एस क्यूब हे जिवो और एटी कोन हे जिवो एटा एस स्क्वायर हे जिवो केवडे एती कहछि जे जोटा हम डायल जोटा हम बैक समझ स्क्वायर में आर नै थलो एटी फिगर रे हम तको एस बेली हम नेलो ओके तो हम फॉर्मूला लिखली और लिखली इफ dv vector or dv equal to elementary magnetic field at P due to current
element ideal vector. Current element ideal vector लिखि परिबो किबा तमे लिखि परिबो current element EF. EF नामक जो हमें एलिमेंट नेचु सेटा करंट एलिमेंट वेक्टर है तार लेंथ होची dl बेले हमें कहि सचु ता जगो फील्ड हला dp. एक्चुअली तमे हठात के होल कॉइल पई की तो फील्ड काढी परिबो नाही. तो तमे चिंता करियो पड़िबो जे कोन काढिबो जे होल कॉइल ता एमती छोटे 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 अंश रे विभक्त हेछि ना नहीं तार गोटी अंश हला EF. एठी हमें शेयर करते गोटी अंश हला EF तार दर्घ्य हला dl करंट जाउची I तेरो ए dv रा मूल्य कोन हबो the magnitude of dv कोन म कहली the scalar value of dv according to this formula dv equal to देखो ये कैसे लिखा है जे mu 0 अनेक mu नॉट कहती mu 0 by 4 pi into I dl sin theta by s square. Don't get confused. In the formula for study of Biot-Savart's law, we have taken this as r. So by r, और एठी हम लेछु s. एठी हम कोन लेछु s लेछु तो फॉर्मूला आइगला एठी. एवं एठी पुनी कोन लेट अस सब्स्टिट्यूट थीटा टा केते थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. But theta is equal to 90 degree. Theta is equal to kete thi? Theta is equal to 90 degree. Okay. Then sei sutra anusare in vector form dv vector is equal to mu 0 I by 4 pi into dl vector cross s vector divided by s cube. এই সূত্র অনুসারে mu 0 I by 4 pi dl vector into s vector by s cube. dl vector into cross into s vector by s cube. बुझ पहले तमे हैला कि नहीं मु जदि को एई फॉर्मूला यूज करबी ताले मोर मैग्नीट्यूड केते हिजबो इन मैग्नीट्यूड dv is equal to mu 0 I by 4 pi it is theta over 90 degree is I dl by s square. इस देखो मु थीटा जदि 90 सब्स्टिट्यूट करबी mu 0 I by 4 pi into dl sin theta 1 हेगला sin 90 is 1 a square is a square. So mu 0 I by 4 pi dl by s square and where goes sin theta sin 90 and that is equal to 1. This is in vector form and this is in which form? This is in scalar form. Then the question is a jo it is dv and what should the direction? The direction dv is obviously perpendicular to what and what? dl vector and s vector. एठी हम dl vector and s vector लेनी तो हमें ओटा प्लेन कथा चिंता करिबा जो प्लेन रे कोन है छी ना dl vector भी अछि आ को वेक्टर अछि हमर s vector मध्ये अछि तो ता प्रति dv ना परपेंडिकुलर हबो तो सेही पे देखो रेड रे शो करा है छी at p here is a vector which is perpendicular to s vector अछि ना देखो एटा ला s एटा ला dv. Okay, so d vector is given by it is p nature I mean change the q भी नहीं करेगा pq vector. Okay, pq vector का हमें बोलते हैं dv vector. So it is shown by pq. तो जब हम डायरेक्शन कथा चिंता करिबे एटा को लिखे दिए direction of elementary magnetic field
is along PQ vector which is the direction of dB vector. It has to be perpendicular to what? S vector. It is perpendicular to dl vector and s vector. जदि dl vector सहित तुम जदि confusion मन रहउची ताले तुम खाली कहि परिबो it is perpendicular to which vector? It is perpendicular to s vector. Up to this I think it is very clear. So dB is like that, right? It follow देखो dB is along PQ एवं this is your s प्रति लंब होला केते PQ तो PQ होला dB रो डायरेक्शन. पिला माने आमे ए स्टेज पर आसिलो. What is dB? dB is the small elementary magnetic field which is produced at P not due to the entire coil but only due to a current element or a part of the current element, a part of the current element, a part of the coil which you have taken as EF. Okay. Now its value is mu 0 I by 4 pi dl according to your note. This is your equation 2. Okay. Prior to this we had written this which was your equation 1. What was this thing? This was your equation 1. 1 and 2 which are given in the note, you can follow it. Now the question is, let me here introduce how gote angle jab ame kahiba phi. What is phi? Phi is the angle between s and x. Dekhucha na nahi? Let us introduce phi as the angle between s and x. I repeat here, this angle is between positive direction of s and positive direction of x. What is s? That I have repeated so many times. S is the distance of P from the element, current element. What is x? X is the distance of the same point P from the center of the coil. Okay. So this is your phi. Very clear. Then the question is your this vector dB vector. Let us resolve dB vector into two mutually perpendicular component along CP, which we have taken as x-axis बेले हमें कौन चे C रूपी तक हमें कौन कौन चे x बेले कौन चे and perpendicular direction and component on CP and इटी में ना गवा आपको हमें कोई बार P y आपको हमें कोई बार P y dash इटी को हमें कोई बार x. So CPX आपको कोई बार that along CPX which we take as your x-axis and the other one is y p y dash and y p y dash taken as y-axis, that is taken as x-axis, taken as x-axis and this is taken as y-axis. Whatever here to whatever here. Phi को हमें introduce कर सकते हो. Phi is your this angle. Now you say this is perpendicular.
এটা কোন এটা perpendicular y dash is perpendicular to cpx. I think it is very clear. Now this angle plus this angle is equal to 90 degree. है कि नहीं? And this is perpendicular to this. So this angle plus this angle is also equal to 90 degree. देखो सब तो लिखले बहुत अधिक आ रही This plus this is 90 degree. This plus this is equal to 90 degree. This part is common. बाकी रहेला कौन? इधर इधर रहेला phi. Obviously इधर रहेला phi. So this angle must be equal to this angle. Okay. From the figure. From the figure, angle YPQ is equal to phi. कोई दे तुमको don't lose this explanation. एक तो figure अनुसार है this green line is perpendicular to this blue line. So this plus this कितने है the tick mark and the dot they add up to make it 90 degree. Again this red line is perpendicular to blue line. So the dot and this line, this angle tick mark is also 90 degree. जो इटा का मैं काटी दबा इटा को तो रोइला कौन ये एंगल का से एंगल से समान. I think you understand it. तो मुझे लिखिए YPQ is equal to phi. सही है ना? बर्तन कौन करके रोइला बर्तन. तापर हमें कौन करना ठीक ये एलिमेंट रो तब ऑपोजिट डायरेक्शन रे हमें आउ गोटे एलिमेंट नबा जाको हमें कहिबा जाको हमें कौन कहिबा तो नोट रे लिखा ही छे हमें तो कौन कहिबा जे मु ताको E डैश एवं F डैश नउछ तो नोट रे जातिबो तमे सिया लिखिबो जे के बदे तम नोट रे अछि. सो दिस इज इक्वल टू E डैश F डैश. ओके हमें क्लियर. बर्तन हमें लिखिबा एठी let us choose an identical means same length identical current element E dash F dash. I make it very clear in the note. Probably this is JK, whatever it may be, it has given on the diametrically opposite side of the vertically placed coil. जो कॉइलटा वर्टिकली रही ठीक तार ऑपोजिट डायमेट्रिकली ऑपोजिट साइड रे आ गोटे एलिमेंट ले E dash F dash लेंथ करते सही dl that is the length which is equal to EF. तो तार जब मतलब फील्ड हम there will be an elementary field dV dash at P due to this element E dash F dash. Now you see it is S और आ भीतर है कोण थला कहते phi तो इथे भी कोण कहते हैं वो phi will be equal to this thing. Okay, so that will be equal to E dash F dash. Okay, in the figure DB was shown as perpendicular to S. Now you come to the reverse side. DB dash which is equal to DV for all practical purpose. Okay, is perpendicular to this S. ऊपर S पाएंगे यहाँ वाला perpendicular, तोड़े S पाएंगे यहाँ वाला perpendicular. Okay,
and this angle is phi. This angle is also phi. I mean dv dash na likhiba, but in magnitude that is equal to dv. In the figure, angle CP midpoint C dash is equal to phi. एगोटा एते परीक्षा लिखिबनी मन रखि थाओ ए एंगल रे जदी phi हला from symmetry this angle is also phi. तो मैं ये लिख परिबो from symmetry phi is equal to angle between CP and element E dash F dash. ऊपर जहाँ तोड़ा हला सीधा. ओके. dv dash का कौन is perpendicular to S. देखो. इटा होची S. dv dash is equal to perpendicular to S. Right? है गला. Now हमें इटा को कौन करीबा ना resolve करीबा. Okay. Let us now resolve. It is problem S and dv dash is equal to dv in magnitude. खाली problem रे dv रो magnitude जहाँ ऊपर है तो dv dash रो magnitude मध्य होची सेगा. Okay. Let us now resolve dv dash equal to dv. Let us now resolve dv dash equal to dv along two mutually perpendicular directions, which are along x and y axis. Now I am rubbing it. देखो ये एंगल जाउची phi इटा जे db तले यार कंपोनेंट केते हबो db cos phi एटा होची db dash इक्वल db यार कंपोनेंट केते हबो db cos phi मु लिखिबी db cos phi equal to component of db along py and py dash directions, which are opposite. हैला यदि अपवर्ड यार जदी रिजल्ट करिवो db cos phi याडू गले db cos phi मु लिखि देली components of db along py and py direction एवं db sin phi याडू जेतला cos phi तल याडू केते हबो आइटा हबो db sin phi r मध्ये केते हबो db sin phi. So db sin phi equal to two components along x axis, two components along x axis. इट में देखो ऊपर db cos phi तळ db cos phi they are equal in magnitude but opposite in direction. तले कोन सेटा हबो सेटा कैंसिल कर दिबो db cos phi components
are along opposite directions, so they cancel out. ତେଣୁ ऊपर dv cos phi तଳ dv cos phi ये कौन है कैंसिल करेगा एक सेकंड में कितना कम ना दीटा रहेगा बट टू dv sin phi components add up to produce लिखे बनी to generate a net elementary field dv sin phi इसके लिए कहते हैं जो 2 dv sin phi along which direction? Along x axis. I have discussed this particular case quite elaborately. Lot of ideas had to be given to you about the vector directions and the angles. Okay, so let us say that this is part 1 of our discussion. Part 1 of our discussion of this particular theory, magnetic field at a point on the axis of a coil conducting current. This is part 1, we will assume it. Now, the rest of the part, we will do it in part 2 on the same topic.